Well, what a prime example of how a lower scoring game of T20 cricket can still provide plenty of entertainment. The drama, the swings, the momentum of tonight, it's just about giving us all whiplash. But eventually it was Lahore Qalandars who managed to get across the line tonight, winning by 17 runs. What an amazing effort by them. Huge celebrations all round. You could just feel the atmosphere of the crowd getting behind their boys tonight, and they were victorious once again at home. And as we look at the match summary, well, it was a tale of completely opposite fortunes today. Lahore sent into bat, and at 50 for 7 in the 10th, it was looking absolutely disastrous for the Qalandars until the experienced seconder Raza played a priceless innings of 71 off 34. Not out, alongside Rashid Khan, putting together a big partnership that got his team to a respectable total of 148. And in return, Quetta came out of the blocks firing, but after going for 10s in the first 6, with Smeed threatening to go big, enter Rashid Khan, 2 for 14, plus dot ball pressure from Visa and Ralph, who ended up being the pick of the bowlers with 3 for 22 today. A really comprehensive bowling performance from the entire unit. And one of those star players happens to be joining us alongside me in the pitchside studios, Rashid Khan with Simon Dool. And Rashid, I mean, what a win that was today. That one had to feel good. Yeah, a great win for us as a team. I think, such games gives you lots of confidence and lots of energy for the rest of the game, especially later part of the competition. And while looking to the first 10 hours, we lost 7 wickets of 50-60 runs, but coming back from that and winning, I think it's a huge booster for the whole team. And definitely there's going to be areas we need to improve, to think about, but most importantly we got those 2 points. Your partnership with Seconder Raza, we had him on a couple of nights ago, and he's talking about his love for you and just the way you guys are bouncing off each other and gelling together. How do you find that? And I mean, geez, he's some sort of impressive cricketer, isn't he? Amazing. I think I have been playing with him from the last 7-8 years, and always in the opposite side, Afghanistan, Zimbabwe. But the hard work he has been doing, and the love for this game he has, it has been amazing. And I feel like, that's the main reason behind he has been so successful from the last 1.5 years, especially in the World Cup as well, and now here. So I think his love for the game, and then, got him in the same team, spin twins, we talk about a lot in the net session, and also we got the batting as well. We got the opportunity today to bat again, and the only thing was, like I said to Raza, look, just don't think about to be getting out less than 100. Let's just put 130. I feel like it's enough for us as a bowling unit. And I said I'm not going to go for big shots. I want to take some time, make it sure like I'm playing a test cricket. And the last 3 hours, maybe there will be some funny shots to play. With this philosophy, I know you were sent in tonight, but the first couple of games here, deciding to bat first. How does that go with you? Because you kind of get a wet ball at times. There's going to be a little bit of dew. You're having to bowl a little bit earlier as well. So things are slightly different for you in this role or this environment? Well, it's just about the mindset you have for, as a player, I'm always ready for any situation whenever I'm brought by the captain, to bowl. And that is something which I already make my mind, I never bring the things in my mind which gives me the negative energy, that if I just say to the captain, I want to bowl in the first 10, I want to bowl in the first 14, I feel like that gives me lots of negative energy. And I just told him, make it simple to the captain, whenever you need me, either that's a power play, later part of the innings, in the middle, I think I will be there and ready. And with the dew as well, here is when we came first practice, lots of dew was here, but ball few session with the dew ball, and then made it wet and tried to spin with that, and I think that really helped. But mentally we are ready for it. If there is batting first, bowling first, I think as a professional player you have to be always ready for it. And it was 2 for 14 for you, so fantastic figures. Obviously in your first game here, we're not used to seeing you go for runs. You did, but the last 2 innings you've come back spectacularly well, as we know that you do, and came into bowl in the power play, which as we know is not usually where you're used to bowl. But how important is it to be able to dig yourself out of the hole that the bowling unit has been able to do today? That would set you in such good stead for the rest of the competition, to know you can come back from a moment like this and end up with the goods. Absolutely. I feel like that's, as I said earlier, it's a great learning for us as a team. Like never give up. I think that was the best example today. We never give up. Doesn't matter either you score
150, I score 200. I feel like, there are teams which can easily defend 240 or 200, but I think before coming to the bowling, we just had that word in the car, like, we just need to go. That's why we have the best bowling unit. We have to defend that. We have to have that kind of mentality where we can defend those 150 runs. I feel like nowadays in T20, if you're scoring 150, 160, there should be like 70% of that confidence as a bowling unit. The skills we have around, I think you should be there, like, yes, defending, because a couple of good overs in the middle, take wickets, one good medal. I feel like that gives you that energy and then pressure on the opposition team. So we had the same mindset today as well. One of those bowlers is the elder statesman of your team. He got a new shirt today, David Visa. I know he's been groomed as sort of a real leader, but maybe a future coach of this side as well. He gives a lot of the team talks. Tell us a little bit about David Visa, because he must be so good to have in the side. A legend. I'm so lucky to play with him for long, playing with him in the Blast and then playing with him here as well. And the contribution he has been doing for this team from the last 3-4 years, he has been great. And at the moment, he's a playing coach for us as well. Yeah. We as a team call him a playing coach. Yeah. And, you don't call him granddad or anything like that. Nothing terrible like that, do you? No. that was an absolute yes. I mean, he's probably still cleaning up the dugout and picking up all the water bottles, isn't he? He tidies up after you all. Great example for us, all the youngsters, just to look after what we're doing. It's just not about the cricket, it's just about looking around us and making sure that we are well cleaned and well disciplined team as well. That's why he's the best in the team, and his suggestion, his experience is so important. And I think there has been lots of respect for him in the team, and his contribution is wonderful to have him, and especially with Shaheen, he has been there all the time. And so I feel like, his contribution from the last 3-4 years is amazing. Yeah. I just want to touch on Shaheen as well, because relatively new to captaincy. How are you finding his role, and what is he sort of providing from a captaincy point of view? Well, it's all about the whole management in the family we have, this Lahore Qalandars. It's like all on a single, like in a page. There is nothing like different ways of people having different things in here and there talking. I don't think so. I haven't seen those things from the last 3-4 years in this team, and I think that's the beauty of this team, and that's the reason behind the success as well. Everyone listens to him, everyone respects him a lot, and he has been so calm. I haven't seen him like, the way he has been treating especially the youngster, which is great, and it makes you so happy that the way he handled the youngster. He's meeting with them and giving them the time and talking to them, discussing the things. I think that makes the environment so beautiful. And I think as long you have that kind of environment and you inside the field, you're much relaxed and you just focus on you do the best for the team. But since he has got this opportunity of being a captain of Lahore Qalandars, he's wonderful, and he has been doing a great job. He's been absolutely awesome, as have you been. Aqib Javed said to us before that you've been an absolute blessing to the team, and we've been blessed to have your company with us for a few moments at the end of this match. So we will let you go and celebrate with the rest of the boys. Rashid Khan, thank you so much for your time, and we can't wait to see what you boys pull out the next match in a couple of days. Thank you so much. Thank you. All right, well, no surprises who our master blaster of the evening was, as he wrapped up all the awards in the post-match presentation. He was brilliant tonight, Sikandar Raza. We just heard Rashid talking about him, but the rescuing the situation, 50 for 7. Let's not forget that's where they were. It's all about posting a total. How do you post a total? Someone's got to take responsibility. Sikandar Raza did exactly that. Found boundaries when needed, placed the ball beautifully. That little partnership with Rashid was exceptional, and he got his team a score. Yeah, strike rate of over 200 and 3 sixes, 8 fours. He was just unbelievable this evening. And Quetta Gladiators has slid into Rashid Khan's spot. I mean, gosh, I've got whiplash from that game. The momentum swung that hard, didn't it? I mean, what did you make of that match? Look, at one stage it seemed like that, the Quetta Gladiators, they're going to roll over the Qalandars. And what a comeback. You don't really see that often. But I think it's just the belief of these two, who put up such a wonderful partnership. Sikandar in special, I mean, he was amazing. As we all know that in the last couple of years, he's just come up so good with the ball in hand. And the fielding, don't forget, the one he
he pushed that back for the ball was going for 6. Wonderful. I mean, amazing. That partnership really give them confidence going forward also. What a partnership, and some excellent leadership as well, which now brings us to the stat attack of the night. And this evening, it's all about the captain, Shaheen Afridi. In terms of the highest win percentage as a captain, he's only sitting behind Mohammad Rizwan. So 19 matches he's held the reins, and he's won 13 of them. So that's a 68.42% winning average. Obviously, Mohammad Rizwan, even more effective there with 70%. But for a young captain, he's doing awfully well and leading his troops with such, I suppose, wisdom beyond his years. Yeah, you can look at this and you can say, okay, he's still relatively young. He's vastly experienced still at the international level, but what he does do in general terms, he's had 2 games here in Lahore where he hasn't been quite at his best with the ball, but in between times he's got such great resources around him. So he's learning all the time. I think that's one of the key, learning all the time and getting better and better, and he's got a great group of senior people around him. That's the one thing I think the Qalandars management group have done superbly well, is surround him with the right people. Yeah, he certainly has been a revelation for Lahore Qalandars. Well, it's my time to exit the studio, but do stick with us because Sikandar Bakht will be back to unpack the player of the match and many other things. Welcome back to the Pitchside Studio, and straight away we'll talk about the guy who was standing against Quetta Gladiators. Sikandar Raza was the player of the match. Well, he was simply magnificent from the word go. 34 deliveries, 71, and it seemed like that he took his time early on. So that means the first few deliveries he was just blocking it, just getting the pace of the pitch, and then once he gets going, he was just amazing. Those 5 fast hands, amazing. Well, that was a start. 50 for 7, Simon Dole, and then he just embarrasses the opposition. Yeah, brilliant, wasn't it? I mean, he's just one of those players, and we had him on. He's so level-headed. I think that's the key to Sikandar Raza and the way he plays. He's got so much international experience, summed up the situation. We're just talking to Rashid Khan about that partnership, and they talked about, let's get something above 100. Let's try and make sure we don't get out before that 16th, 17th over, and then we get an opportunity at the back end to maybe post 130, 140. That bowling attack is brilliant. But what he did tonight, I thought, with that man of the match or player of the match performance was just exceptional. How he summed the situation up, that partnership with Rashid, and then how he found his boundaries. Look, I'm really impressed with. The more I see of him, I think the more impressed I am of him. Yeah, we just couldn't take him out of the game, the equation, because he was everywhere. It was just his day. And that save that he did on the boundary, that has to be the switched on moment of the day. Switched on indeed, and he was all day with the bat in the field. This was a moment that was needed as well. You could see the team just, they grew after that. This is brilliant. It's never going to be saved or caught. He's just all about trying to save 6 runs. He ends up saving 5 because I think they took 1, and that is just a moment of absolute brilliance in the field. All right, I'm telling you, bat, catch, whatever, it's the name. That's the thing, it's just the name. What's in a name? Okay, time for us to take a break. When we come back, we will have a lot more to talk about. It's really more of Sikandar Raza, and of course we'll have some discussion of why and what Quetta Gladiators were doing. But thank you, Simon, for joining us, and you don't go away. Welcome back to the Pitchside Studio, talking more about this match, match 18, Lahore versus Quetta. We've been joined by Uruj Mumtaz, who was ready with her bag at 50 for 7, and then she came back. But what was going on? I don't know. It's just they can't finish the game, or they just stop believing they can win.
Well, I spoke to you on the top of the show, and it was an area that at least I saw that they haven't been able to finish innings out. And it was a similar situation, first with the ball, 50 for 7, and you just can't fathom how they let Lahore get to 148. And then to be 53 or 52 or no loss in 5 overs, and then to fall short by 17 runs. It's quite bizarre, but it's a problem that they've had from game 1, and they haven't been able to rectify it. So, and today was a golden opportunity, and you almost felt with the start they got on either side of the innings that it was Quetta's game to win. Okay, well, Will Smith gave them that start like you just mentioned, but then wickets started falling, lost 7 of them. Let's have a look. Yeah, the first one, an outside edge. It was pretty much wickets galore after that first 53-run stand. Rashid Khan, as soon as he came into the attack, the champion that he is, impacts the game, got the big wicket, and this was exceptional. Fakhar Zaman, he's been electric in the field. Saw that a couple of days ago with some gun catches and affecting a run out. And it was a matchup, leg spin, not the favoured option for Iftikhar. Rashid Khan straight up caught behind. I thought that was a good catch from Sam Billings. And this one, picture perfect in terms of picking the fielder out for Martin Guptill. Odean Smith tried his luck, one too many in the end. It just got a bit tough. It was a simple catch in the end. The last one to fall. The story was pretty much done by that time. जब हमारे साथ वकार यूनुस बैठे हों तो बॉलिंग की बात करनी चाहिए ज़रूर। और जो बॉलिंग फिगर्स हमने देखे आज लाहौर कलंदर्स के, वो ना सिर्फ अक्कासी करते हैं जिस तरह से लीड कर रहे थे आज, क्या नाम है, शाहीन शाह अफरीदी, बट अगर आप कोटा के चलें, कोटा के भी देख लेते हैं, इन्होंने तो सारा काम कर ही दिया था, लेकिन बैटर्स ने जो है वो अच्छा काम नहीं किया आज। मेरा ख्याल है इन्होंने भी कोई इतना अच्छा काम नहीं किया। मैं एक स्टेज पे जब इन्होंने, इनके दोनों हाथ पड़ गए थे उनकी बैटिंग के ऊपर, अब आपने विकेट्स भी ले लिए थे, कंट्रोल भी कर लिया, तो फिर एंड पे आपने जाने दिया। आई थॉट दे जस्ट गॉट लिटिल कंप्लेसेंट, और उन्होंने फिर ना इजी रन्स देना शुरू कर दिया। दे वर लाइक, नो डाउट उसमें शक नहीं है कि सिकंदर बहुत अच्छा खेले, लेकिन you know things were not really good in their bowling also. ज़्यादा 115-20 रन होने चाहिए थे, लेकिन I mean इनकी तो क्या ही बात है, ये तो probably टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलिंग अटैक है। I mean हम बात करते हैं शहीन, राशिद, रऊफ, वीसे, रजा, they all international, but Zaman is almost international. I mean the way he has been bowling in this tournament has been outstanding. So can't believe, to be honest, कि कोयटा यहाँ से मैच हार गई। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, हम बात कर रहे हैं बॉलिंग एफर्ट की और बॉलर्स की, तो क्यों ना हम देखते चले, और वकार यूनुस हमारे साथ है, तो हम क्यों ना फास्टेस्ट डिलीवरी को देखते हैं, जो कि 150 की स्पीड थी, 150.6, और ऑफ कोर्स जब हारिस रऊफ का नाम हो तो वही होंगे, और उन्होंने कराई थी ये बॉल उमैद आसिफ को। लेट्स हैव अ लुक। आई थिंक ये डिलीवरी आखिरी ओवर में गालिबन की थी, बड़ी तेज, और जब भी आप गेंद फुल करते हैं या यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं और आपका अच्छा जोर लगता है, तो ऑफ कोर्स पेस आती है, एंड वी ऑल नो दैट इज पेसी इनफ टू विन दिस एवरी टाइम। तो अब अगर हम बात करना चाहें थोड़ी सी, क्योंकि सारे बॉक्सेस टिक कर दिए हैं लाहौर कलंदर्स ने, लेकिन क्वेटा अब क्या करें यहाँ से? 6 मैच 1 जीत 2 पॉइंट, पॉसिबिलिटी है नंबर्स के हिसाब से बाहर नहीं है, बट ऐसा क्या कर सकते हैं सरफराज की ओवरनाइट कोई ऐसा चीज़ फूंक दें कि इनके अंदर बिलीफ आ जाए जीतने का? देखिए, बिलीफ तो फ्रॉम विद इन एंड एज अ ग्रुप आपको इंस्पायर करना पड़ता है, और सरफराज को कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, चाहे वो सरफराज हो या उनका ब्रॉडर थिंक टैंक हो, कि फ्यू पीपल गेट टुगेदर एंड जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसको इंस्पायर करें कि यू नेवर आउट ऑफ इट, नंबर्स गेम है, दे कैन स्टिल मेक इट, बट जब इस किस्म की परफॉर्मेंस होती है तो उससे बाउंस बैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज जिस तरह हम वकार भाई ने कहा यहाँ से कैसे हार गए वो शायद एक्सप्लेन करना मुश्किल है, और दोनों तरफ बैट से भी और बॉल से भी चेंजेस करते रहे अपने टीम में, वो भी शायद क्लिक नहीं किया है, बट वही वाली बात है कि इनिंग्स फिनिश करना, और ऐसे पॉइंट पे रूथलेस हो गई है अब T20 क्रिकेट कि जब आपने एक टीम को बाहर कर दिया तो फिर आप उनको बाहर ही रखें। वो जो कंप्लेसेंसी वाला फैक्टर है कि नहीं ठीक है, एक दुक्का यहाँ से हो गया, वो करते करते सिकंदर ने जिस तरह से इनिंग्स खेली वो गेम ले गए उनसे। मैंने सोचा एक और चीज़, आपने देखा कि फिर से पहले बैटिंग करने वाले जीत गए। मैं सोच रहा हूँ मैं एक इनाम रख दूं कि
टॉस जीत के बैटिंग करने वाले को मैं साइकिल दूंगा, साइकिल, क्योंकि ये तो नहीं, वैसे तो मानने वाले नहीं है, चेस करते साइकिल जाते पे भी नहीं मानने वाले वैसे। चले एक काम करते हैं, हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे अच्छे एफर्ट्स से, बट जो कैच आज लिया गया बड़ा शानदार कैच था, इसको सेफ हैंड्स में डालना ही पड़ेगा। दिखने में तो शायद इतना ना लगाओ, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। सैम बिलिंग्स ने कैच लिया था ये। ये राशिद की गेंद पे कभी भी आसान नहीं होता है, और स्पेशली जब आप कट खेलने जा रहे हो और ये विकेट में थोड़ा सा बाउंस भी हो और गेंद एकदम तेज़ी से आए और जिस स्पीड पे वो गेंद करते हैं, वंडरफुल कैच, ग्रेट हैंड, बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे आज। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली लो स्कोर था, 148 तक ले गए सिकंदर रजा। अब आपको अच्छी बॉलिंग चाहिए, लेकिन अच्छी बॉलिंग बगैर अच्छी फील्डिंग के शायद हाफ कुक्ड चीज़ हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट था आज जो रन आउट्स इन्होंने किए, जिस तरह की फील्डिंग की, जिस तरह से इन लोगों ने पूरा एफर्ट डाला, एक यूनिट रख रहा है, एक प्रॉपर साइड लग रही है लाहौर कलंदर। फील्डिंग आई थिंक आपको दोनों टीम्स की कहनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से उमैद आसिफ ने और नवीन उल हक ने क्वेटा की तरफ से भी फील्डिंग की, बट फील्डिंग एक ऐसा प्लेयर होता है आपका जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट डालता है। फ़खर जमान की आप बात कर लें, जो सैम बिलिंग्स का कैच था वो भी एक बहुत अच्छी फील्डिंग के हिस्से में ही आता है। तो आई जस्ट फील कि लाहौर एक ऐसा यूनिट लग रहा है कंप्लीट, जिसको आप कह दें तो फील्डिंग, आई मीन जो रन आउट जिसकी आप बात करें, मोहम्मद हफीज़ को रन आउट किया था, वो भी एक बड़े प्लेयर थे। आई जस्ट फील कि लाहौर जो इस वक्त एक कंप्लीट साइड की शक्ल में लग रहा है कि वो जो भी चीज़ ट्राई करते हैं, इट सीम्स टू वर्क। आई थिंक इफ्तिखार, हफीज़, ये 2 विकेट्स ऊपर नीचे गिरी, और उसके बाद फिर जो बीच में उन्होंने आकर राशिद ने और वीसे ने बिल्कुल उनको स्ट्रैंगल कर दिया। आई थिंक वो पीरियड, और फिर ऑफ कोर्स आई डिडंट रियली लाइक, आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज सरफराज, लेकिन सरफराज की बैटिंग को अगर देखा जाए तो रन बॉल अब अगर आप 5 या 6 नंबर पर खेल रहे हैं, तो अगर रन बॉल खेलेंगे तो आप ज़्यादा मैचेस हारेंगे, ये याद रहे। तो मेरा ख्याल है ये वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो मेरा मतलब वो जो बाउंड्रीज जिस वक्त ज़रूरत थी, बाउंड्रीज नहीं लग रही थी, तो उनके बल्ले से भी स्पेशली। ठीक है, ओके जी, टाइम फॉर अस टू टेक अ ब्रेक। व्हेन वी कम बैक वी हैव सम मोर स्टफ टू शेयर विद यू, सो डोंट गो टू फार। वेलकम बैक टू द पिच साइड स्टूडियो। और बात करें लाहौर की, तो हैट्रिक हो गई आज फुल हाउसेस की। 3 बार कैपेसिटी क्राउड यहाँ हमें देखने को मिला और लाहौर को सपोर्ट करते हुए नजर आए, इनफैक्ट क्रिकेट को। आइए इनको देखते हैं और इनके जो लम्हात थे जिन्होंने यहाँ गुजारे, क्या कैफियत थी, क्या ऐसा क्या लगा उनको, उनसे पूछते हैं। इट वॉज रियली गुड, टेंस मैच था, इन्होंने बहुत कम स्कोर दिया था, लेकिन बॉलिंग ऑर्डर अच्छा था, मेरे ख्याल से इसलिए जीत गए। PSL के जितने भी लाहौर कलंदर ने जितने भी मैच दिखाए हैं ना हमें, या जितने भी खेले हैं, चाहे जीते या हारे, उन्होंने हमें एंजॉय ही करवाया है। ये लाहौर कलंदर की खासियत है, उन्होंने बताया कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हारिस रऊफ, शाहीन, राशिद खान, उन्होंने बताया कि हम 150 से भी कम टारगेट को हम डिफेंड कर सकते हैं। स्पेशली जब शाहीन शाह अफरीदी ने किया है, बॉलिंग की है, बहुत अच्छा लगा। पहले तो हमें ऐसा लग रहा था बिल्कुल मैच हार गए, मगर आखिर में जो इन्होंने डिफेंड किया है, जो बॉलिंग अटैक रहा है, जो इन्होंने बॉल बीट करवाई है, क्या ही बात है, ज़बरदस्त बॉलिंग का आज इन्होंने सबूत दे दिया कि वाकई लाहौर कलंदर है। शाहीन अफरीदी की जो बॉलिंग थी, फील्डिंग थी, आउटस्टैंडिंग। लाहौर कलंदर जिंदाबाद। डे बाय डे लाहौर मैचेस जीत रहा है और लाहौर का क्राउड खुश हो रहा है। और मैंने पहले भी कही थी ये बात कि इन्होंने कई साल वेट किया है, पिछले साल के चैंपियन रह चुके हैं, बट आई थिंक दे बीन वेटिंग। अच्छा हुआ कि यहाँ मैचेस हो रहे हैं और लाहौर जीत रहा है, सो दे जस्ट वेरी वेरी हैप्पी एंड कमिंग इन बिग नंबर्स। अब आप कराची के क्राउड से कंपेयर करेंगे तो आई एम सॉरी, बट मुल्तान के कर सकते हैं, फड्डा तो कराची लाहौर का रहता है ना, मेरा और जैनब का, तो वो वाली बात आई थिंक जैनब सुन के बहुत खुश हो जाएंगी। बट इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आई थिंक ये लाहौर के साथ वो वाला स्लोगन सही अटैच होता है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। एंड वो जो इमोशन है ना, वो लाहौर के क्राउड में वाकई दिखता है। एक क्विक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट के पास जाएँ। ये सारी जीत में और बॉलिंग की परफॉर्मेंस में वो एक जो पार्ट था वो कहीं खो गया और दब गया 50 पे 7, ये गलती कर क्या रहे थे आज, मुझे समझ नहीं आई बात। थोड़े कंप्लेसेंट थे यार, आई थॉट के वो कंप्लेसेंट, ओवर कॉन्फिडेंस थे, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे दे वर इन अ बिट ऑफ रश कि यहाँ 200 ही रन होंगे, और उसी में इन्होंने विकेटें खोई हैं। और ये तो लकीली वो नीचे से बहुत अच्छा खेल गया, और या कह लें कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बॉलिंग बड़ी गंदी कर दी, तो ये इस तरह की सूरत हाल बन गई है, इतने रन हो गए।
वरना एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर हार गया मैच, और क्राउड काफ़ी मायूस हुआ था, लेकिन इट्स गुड कि क्राउड ने एंजॉय किया और फिर वापस मैच में आए और फिर मैच जीते। और इस तरह की जो जीत होती है ना, ये आपको बहुत आगे लेके जाती है। और आप हालांकि मैच पिछले भी जीत के आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो जीत होती है कमिंग फ्रॉम नोवेयर, वो आपको एक बिलीफ देती है कि हम ना सिर्फ अगले मैचेस जीत सकते हैं, हम बल्कि ये टूर्नामेंट भी जीत सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो आप कोई भी गलत कदम नहीं उठा पाते कलेक्टिवली एज ए टीम भी। हम मसालेदार मोमेंट की बात करें तो जो हफीज़ रन आउट हुए, मैं पूछूंगा क्या सोच रही हैं इस बारे में उरूज। फ़खर जमान का ये थ्रो था, आप देखें चल के मसालेदार मोमेंट। बॉल यहाँ पर तेज आता है, बट फ़खर जमान की अवेयरनेस उनके सही हाथ पे भी गया, लेफ्ट हैंडर है उन्होंने, बट डायरेक्ट थ्रोज जो होती हैं वो अक्सर गेम का कॉम्प्लेक्शन चेंज कर देती हैं। आई थॉट हफीज वाज स्लाइटली स्लो आउट ऑफ द ब्लॉक्स एज वेल। फ़खर जमान का थ्रो तो था बहुत अच्छा, लेकिन ऐसी एक फीलिंग सी लगी कि शायद हफीज़ थोड़े से टू माइंड्स में थे, उनको लग नहीं रहा था कि ये डायरेक्ट हिट आ जाएगी। एंड में उन्होंने अपना चौथा गियर लगाया। अब क्या कहलवाना क्या चाह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो था, ये कैलकुलेट कॉल उन्हीं की, थोड़ा स्लो थे, उन्हीं की कॉल। थोड़ा आपने खुद ही पहले बोल दिया ना कि थोड़ा ब्लॉक्स में से थोड़ा स्लो निकले और फिर आगे भी जाके थोड़ा इतना वो एफर्ट जो होता है ना, जो यंगस्टर 20-22 साल का लड़का होता है, इज नॉट 22 ईयर्स ओल्ड, रिमेंबर दैट। डज दिस रिफ्लेक्ट ओवरऑल जो माइंडसेट चल रहा है कैंप का हार की वजह से, कि एवरीवन इज इनडिसाइसिव इन इवन स्मॉल थिंग्स? Yeah, you can say that। आपका जो ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर होता है, या आपको जो जीत एटमॉस्फेयर बनाती है, वो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है। और जो आप जब गिरी हुई टीम हो या जब अच्छा ना खेल रही हो, उसका फिर इस तरह की कंडीशन होती है कि जहां जीती हुई पोजीशन से आप मैच हार जाते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल आफ्टर 18 मैचेस। कहाँ सूरत हाल बन रही है, और आप देखें कि लाहौर तो ऑफ कोर्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है ही, लेकिन क्वेटा ने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी। दोनों मैच से पहले भी यहीं थे और मैच के बाद भी यहीं हैं। बट ये जो रास्ता कवर करना है क्वेटा को, सारे मैच जीतने होंगे, कराची को भी कुछ करना होगा, उनके 7 मैच हो चुके हैं। इससे थोड़ा सा सुकून का सांस इस्लामाबाद और पेशावर को मिलेगा। अगर कोई 2 टीमें बिल्कुल ही पीछे रह जाएं तो उनके एफर्ट्स में इतना प्रॉब्लम नहीं। आपने पहले भी कहा था कि नंबर्स के हिसाब से अभी भी कोई भी टीम बाहर नहीं है, और आई थिंक जो हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे वो इस पॉइंट्स टेबल से ही प्रॉब्लली मिल सकती है कि आप कराची के पास अभी भी 3 और क्वेटा के पास अभी भी 4 गेम्स हैं। आपके कंट्रोल में जो चीज़ है वो आपके मैचेस हैं, आप वो तो जीतें पहले। तो आई थिंक इट सम्स इट अप इन टर्म्स ऑफ क्वेटा के। और एक और बात जो अभी हम बात कर रहे थे कि क्वेटा के जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, दे प्रॉब्ली हैवंट स्टूड अप। मार्टिन गप्टिल, जेसन रॉय, सरफराज, इफ्तिखार, हफीज़, बिट्स एंड बॉब्स में परफॉर्मेंसेज हुई हैं, बट वो कहते हैं वो मैच विनर्स उस तरह से शायद उभर के नहीं आए जिस तरह से बाकी टीम्स के साथ। एंड द यंगस्टर्स, बहुत सारे कभी कभार ये भी था कि इमर्जिंग प्लेयर्स हमने देखा है बाकी फ्रेंचाइजीज में, जो यंगर पाकिस्तानी बैटर्स हैं उन्होंने बहुत इंप्रेस किया है। ऑल्सो प्रॉब्ली बिट ऑफ अ डिफरेंस। देखिए, परफॉर्मेंसेज हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं परफॉर्मेंसेज की। कोयटा के इंडिविजुअल्स ने परफॉर्मेंसेज की हैं, 100 रन भी किए गप्टिल ने, लेकिन ये है कि मैचेस नहीं जीते। आई मीन इसी तरह कराची का भी यही हालत है। इमाद वसीम की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो इस टूर्नामेंट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है, लेकिन कराची स्टैंड्स नोवेयर। सो आई मीन इट्स नॉट ओनली वन पर्सन, यू डू नीड कलेक्टिव एफर्ट। चलिए, आपने कराची का मेंशन किया, इस उरूज वर्सेस बाजिद टुमारो इन पिंडी। हैव अ लुक एट दिस वन। ये इंपॉर्टेंट 19वां मैच है। It's Islamabad United versus Karachi Kings in match 19 of the HBL PSL. So hope you've enjoyed the coverage जो हमने आपके लिए आज दी, and we'll leave you with these very super moments. Thanks for being here with us. Loved catering to you and giving you this game. Congratulations to Lahore. That is the end of Abdullah Shafiq. Timed beautifully for the first boundary. What a shot that was. Half a dozen is first in the HBL Pakistan Super League for Sikandar Raza. That's a beautiful shot. First shot from Yasir Khan's bat. Edge and taken.